Modi, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. India is witnessing a surge in Hindu nationalism under Narendra Modi's rule. दुनिया के देशों में भारत का कहीं कोई सम्मान नहीं था। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनके कारण पूरे विश्व में हमारे देश का एक नाम हुआ है। As the country comes out to vote, we met many of its voters who said they are living in a climate of fear. आज हम डरे हुए हैं। जिन फ्रेंड्स के साथ, जिन दोस्तों के साथ हम रहते थे, हम लोगों को ये नहीं एहसास था कि ये हिंदू हैं तो इनके साथ हमको किस तरह से रहना है, या उनका नज़रिया हमारे लिए ऐसा नहीं था कि ये मुसलमान है। India's 2019 election is seen as a battle for the soul of the country. Can India choose a prime minister who can bring its 1.3 billion people together? For little more than a month, about 900 million Indians who are eligible to vote will answer this very crucial question. Will Prime Minister Modi stay or go? To find out, we traveled to the North Indian state of Uttar Pradesh. With over 200 million people, Uttar Pradesh or UP has the same number of people as Brazil. But nowhere are India's fault lines more visible than here. This is Aisha. She is part of a Muslim women's collective in UP's bustling capital, Lucknow. The collective tries to empower them by teaching them documentary filmmaking. Aisha says India's social fabric under Prime Minister Narendra Modi's rule has been torn apart. हम लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, एक डर, जो डर वाला माहौल है। तो लगता है कि 2019 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव से ये बदलाव आए कि ये जो डर का माहौल है, वो डर का माहौल खत्म हो। Aisha is referring to the fear that has shadowed Muslims and Dalits who are accused of eating or selling beef. Many Hindus worship cows, and it's given the status of a mother. After the Modi-led BJP came to power, some 18 Indian states banned the slaughter of cattle. But millions of India's Muslims and Christians consume beef, which they are scared to eat anymore, at least in public. So the reality that you can get killed for a random identity issue, whether it's the khana you're eating in a train, is firstly for me like the primary cause of fear, insecurity if we have this government back in power. The government is not directly aiding the cow vigilantes, but most often the lynch mobs have gotten away with it. नहीं, अब ये न तो देश में और न उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा नहीं है, और ना ऐसी परिस्थिति ही पैदा होगी तब इस प्रकार की घटना नहीं होगी। और हम इस बात को कतई नहीं मानते हैं कि हमारी सरकार के समय में किसी भी इस प्रकार से किसी व्यक्ति को संरक्षण किया जाता है। But that's not entirely true. According to Human Rights Watch, Hindu cow vigilante groups killed at least 44 people in the last 3 years. 36 of them were Muslims. For the last 5 years, Modi government were doing, they are separating India. They are separating Muslims, they are separating Christians, Judas. They are separating India into different compartments. People are, of course, insecure for what's going to happen to our constitution. And that's a real fear. It's not textbooks, it's not school curriculum, it's not lynching, it's all of these. It's all the issues that have happened to demonize the Muslim, and to demonize your Muslim neighbor. I think people have become very communal.
So, I mean, it could be that all the issues we're talking about, nobody looks at those and just votes communally. During the same time when we were in UP to gauge the election mood, a Muslim man from the state of Assam was reportedly beaten and forced to eat pork for allegedly carrying beef. But it's not just Muslims who are fearful. Some 90 kilometers from the capital Lucknow, we traveled to the village of Imamganj to hear from farmers. तो आप थोड़ा लेट आए, आप थोड़ा लेट पहुँचे हमारे गांव। एक महीना पहले और आते तो हम आपको दिखाते कि फसल की क्या हालात है। गेहूँ काटा नहीं गया है, गौ माता उसे खुद ही काट दिया है। 35-year-old Ram Sevak Yadav is referring to the problem of stray cows who were let loose after the ban on their slaughter and are now destroying the crops. जो हमारे यहाँ एक बड़ा संकट ऐसा हुआ, जो छुट्टा जो बड़ी संख्या में गौवंश बाहर घूमते हैं, उसका एक कारण यह भी है तो उनको रहने के, उनके खाने के सारे उपाय सरकार ने किए हैं। One of the steps was building cow shelters to house thousands of cows. But the sight of stray cows like this on UP's roads is an indicator that there aren't enough cow shelters in place. The farmers are now caught in a dilemma. गाय माता तो है, जरूर माता है, जगत की जननी है माँ। लेकिन अगर माँ अपने बेटे पर प्रहार कर जाए, अपने बेटे पर प्रहार कर जाए तो कैसी माँ? तो उस माँ की रक्षा करने के लिए क्या जरूरत है? But it's not just the issue of stray cows. India's farmers are also battling a crisis of not getting good prices for their crop. हमें गांव में ये लोग तो बैठे, किसी का अगर ये क्विंटल में अगर गेहूं या धान खरीदा तो होता। In 2014, the BJP won an absolute majority and decimated the Congress party. These farmers say the lack of a strong opposition in the country is the reason why the government hasn't done enough for them. मेरी समझ से तो बदलाव आएगा, जरूर आएगा, और गवर्नमेंट किसी की बने, लेकिन जो है पूर्ण बहुमत में जब नहीं बनेगा, स्पष्ट बहुमत में, मतलब कि जो है तो वो जरूर अच्छा काम करेगा। जब तक जो है विपक्ष नहीं होगा तब तक सही कार्य नहीं होगा, चाहे जौन गवर्नमेंट हो, क्योंकि जौन मन तो का करेगा। जब तक अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि मिली जुली सरकार होनी चाहिए। मिली जुली सरकार हो या अपोजिशन इतना स्ट्रांग हो, अगर उनके 70 सीट है तो इनके 50 सीट होनी चाहिए। Back in the city of Lucknow, 28-year-old Sandhya Verma works in a restaurant. She belongs to India's Dalit community. Dalits are India's most vulnerable caste and used to be called untouchables. मुझे लगता है कि एक तो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो बहुत मजबूत होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि जो बहुत धर्म को लेकर के जो मैंने पिछले 5 सालों में देखा है इस सरकार के आने के बाद कि बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, और इस तरह का जो भेदभाव है चाहे वो दलित, मुस्लिम्स और ऐसे लोगों के बीच, तो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि लोग अभी भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, मतलब जो माहौल मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं इस देश का क्या होगा अगर बीजेपी फिर से आ जाती है तो। But while there are those who do not want Modi and BJP back in power, there are others who admire his unabashed nationalism. Modi's supporters credit him for restoring Hinduism to its rightful place in a secular country like India. हम बीजेपी को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी में नरेंद्र मोदी जैसा एक दिग्गज, गंभीर, धीरवान
नेता प्रकट हुआ है। Modi's approval ratings have improved, and most polling data indicates he will return to power. And a lot of it has to do with the surge of nationalism after the tit-for-tat airstrikes between India and Pakistan, in which India claimed to bomb a mountainous terror camp inside Pakistan. तो जैसे अमेरिका अपने दुश्मन को मारने के लिए पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, इजराइल अपने दुश्मन को मारने के लिए वो फिलिस्तीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, तो भारत अगर ये जानता है कि भारत में जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उन आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री, उनको प्रशिक्षित करने की फैक्ट्री, उनको ट्रेनिंग देने की जो फैक्ट्री है, अगर पाकिस्तान के अंदर चल रही है और वो हमें जानकारी है, तो हमने उसको निशाना बनाया और उसको ध्वस्त किया। तो इससे देश में बहुत खुशी की लहर है। The BJP says minorities will back them, but on the ground, it is difficult to get a sense of the genuine level of Muslim support. As we travelled in UP, we found this Muslim lady at a BJP rally in Amethi. It seemed the BJP workers and supporters wanted to make sure she gave the right answers on camera. यही मुसलमान हमार ना जाए बोल निशा मोदी जी का वोट दे हां फिर कहता दिया हां बस यही बोलो हां नहीं कर दिया बात यहाँ के हुक बुलाया है कि अपने आप आई है अपने आप मोदी जी के प्रेम में हां हां